Hi everyone, so this is the 13th lesson of HTML5 and in today's video we are going to learn how can we create tables in HTML. So table को create करने के लिए हमें किस तरह से tags को use करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Before starting this video, I request you all to please subscribe my channel and let's start. So table क्या होता है? What do you mean by table? Table basically used to arrange your data in the form of rows and columns. So the table that you create in MS Word or you create that table in MS Excel or you create that table in your notebook. Similarly, the table that you want to create in HTML, so it's possible with the help of table tag. So HTML tables allow web developer to arrange the data in rows and columns. It means if you want to arrange the data in the form of rows and columns and you want to create a table, that is possible. You can create that with the help of table tag. Okay. So ये table जो हमारे पास बना हुआ है, you can see this table and we have 3 rows in this table. The first row which is displaying you the table heading, and the first heading is roll number, second heading is name, and third one is class. So for creating this first row and for creating some other rows also, you have to differentiate them. आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो आप पहली रो क्रिएट कर रहे हैं उस पहली रो को आप टेबल हेडिंग की तरह कंसीडर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द रोज विल बी कंसीडर्ड एज टेबल डेटा. जो टेबल हेडिंग होती है उसके अंदर लिखा हुआ जो डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आता है और बोल्ड होता है, और जो टेबल डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में आता है और बोल्ड भी नहीं होता है. ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. और इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टैग कौन से यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ टेबल टैग. Table tag is a paired tag. We have the closing of this tag also, so it's known as paired tag. And अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3 rows create करनी है. So for creating number of rows, we will use number of time a tag, that is tr tag. Tr means table row. And for creating table heading row, we will use th tag, that is also a pair tag, and the full form of th is table heading. And for inserting the data in this table, we will create 2 tr, and inside that tr we will use td tag, and the full form of td is table data. So हम इस टेबल को किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके लिए मुझे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा. सो नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं. सो ये हमारे पास नोटपैड की स्क्रीन है और हम यहाँ पे क्विकली अपना जो भी कोड है उसको लिख लेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML, देन हम लिखेंगे HTML की स्टार्टिंग और उसके बाद मैं बॉडी टैग लगाऊंगी. बॉडी के बाद वी वांट टू क्रिएट टेबल, सो मैं यहाँ पे टेबल को यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद इस टेबल के अंदर मैं पहली रो क्रिएट करने वाली हूँ. तो मैंने यहाँ पे tr दिया. tr देने के बाद पहली रो विल कंसिस्ट टेबल हेडिंग. सो फर्स्ट हेडिंग इज रोल नंबर and the second heading is name. क्लोजिंग भी करना है इसका. then the third heading is class. ये मैंने फर्स्ट रो क्रिएट कर दी है. आफ्टर क्रिएटिंग दिस रो you have to close that row. then for creating a new row you will start tr tag again, and then for table data we will write td. First roll number is 1, then again I will start td for the name and I will write a name aaa, and I will close this td. Then again start td tag and write down the class. So I will write here class 12 and I will close td. Again you have to close tr because you have created second row. For creating third row you will again start tr tag and you have to insert a new records for the new row. So I will write this one quickly. So I forgot to close td here, so I will close, and the third record will be the class. So this way you can insert the table data, and then you have to close tr again
then you have to close table tag and then close body tag and close html. So ये हमारा कोड है. आफ्टर राइटिंग दिस कोड यू हैव टू सेव दिस फाइल. सो हम इसे सेव करेंगे. मैं सेव पे क्लिक कर रही हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ. एंड द नेम विल बी टेबल डॉट html एंड मैं इसे सेव करूँगी और इसे मिनिमाइज करते हैं. ये है हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन. यहाँ पे हम टेबल को ढूंढेंगे. सो ये है हमारी टेबल की फाइल. सो आई विल डबल क्लिक ऑन दिस फाइल. सो दिस इज माई टेबल. सो सी द टेबल इज विदाउट बॉर्डर. आपको इस टेबल का बॉर्डर इंसर्ट करना है. सो टेबल का बॉर्डर किस तरह से इंसर्ट करना है दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में टेबल टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट सीखने के लिए मिलेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.